देशात आणि आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवायचे. कियानचं काम आहे की हे सगळे जे आर्टिस्ट त्यांची कामं घेऊन मिळत किंवा त्यांना प्लॅटफॉर्म्स मिळत नाही, ह्यांची कामं आम्ही पुढे घेतो. आम्हाला असंही वाटतं की लोकांनी बाहेर येऊन आर्ट बघावं, त्याचं सौंदर्य अप्रिशिएट करावं. आणि म्हणजे समजा आपण ते विकेंड आउटिंग्स करतो, ते का नाही आर्ट शोजला जाऊन किंवा आर्ट गॅलरीजला जाऊन इथे बघून आपण आपल्या पिढीची प्रोत्साहन मिळतं त्यांना. आणि असेच अजून आर्टिस्ट जी कला आहे आपल्या देशात ती कला ही समोर येईल. मला वाटतं आर्ट हे अतिशय सुंदर फील्ड आहे की आपल्या प्युरिटी जे आहे ते पुढे. आज ये सोलो आर्ट प्रदर्शन या कोई मिक्स है? हे सोलो आर्ट किसकी प्रदर्शनी नाम? आर्टिस्ट शंका सरकारदास दिल्लीच्या आर्टिस्ट आहेत त्या. त्यांची अतिशय सुंदर कामं नेचरशी इन्स्पिरेशन त्यांना नेचर मिळतं. त्या खूप प्रागच करतात, त्यातून त्यांना इन्स्पिरेशन घेऊन मिळतं. आणि जे आपले जगातलं इकोलॉजिकल सिस्टीम आहे त्याचा त्यांना थोडंसं त्रास होतो, थोडं घटक होतं. मनुष्यांनी जी स्थिती केली कुठेतरी आपली पण चूक आहे, तर ते तसं नाही असायला. आपण पुढे जाऊन जी सृष्टी आहे ती परत निर्माण कसं करावं. आणि ते सगळं त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये दिसतं. कारण सृष्टी त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये अतिशय सुंदर, कामिंग आणि शांत. जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक सुंदर प्रदर्शनी हुई है कला की। जो मुख्य तौर पर भारत की खासियत यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की भाषा है वैसी कला भी है। हर प्रांत की अपनी एक पहचान है उसकी कला में, और कला एक मेडिटेशन का साधन है। तो आज की इस प्रदर्शनी में शंपा जी ने जो बात कही है वो यही है कि आप ज़मीन से निकलते हैं और ज़मीन में ही जाकर मिट जाते हैं। तो वही संदेश देने का प्रयास है, और वो संदेश देते हुए उन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट जो कि प्रिजर्व होने ज़रूरी है, जो मॉन्यूमेंट्स है जिनको प्रिजर्व होना, कई सारी ऐसी कथाएं हैं जो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। तो वो ये प्रयास कर रही है कि अपने चित्रों द्वारा लोगों तक उन चीज़ों को वो पहुंचाए, और बहुत ही खूबी से उन्होंने वो अपने चित्रों द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सर, यहाँ में जो एक कदम है, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो है अपनी प्रदर्शन को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो ज्ञान इसमें जो एक अच्छी भूमिका निभा रही है क्या? मुख्य तौर पर कला का आज की जो स्थिति है, मुख्य तौर पर मैं पेंटिंग्स की बात करूँगा तो पेंटिंग्स इज मोर मार्केटिंग। और कलाकार अगर अपने आप को कहीं कमज़ोर पाता है तो वो मार्केटिंग में पाता है। तो हर कोई चाहता है कि अगर उसकी कला को सही सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि कला जो है वो राजाश्रय के सिवा नहीं जिंदा रह सकती। तो ज्ञान जैसी संस्था है जो राजाश्रय मुहैया कराती है, जिससे कि कलाकार जो है वो लोगों तक पहुँच सके और वो सही मार्केटिंग उसकी हो सके। तो कियान के इस प्रयासों के लिए और जो प्रदर्शनी में देख रहा हूँ उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आरती जी एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ जिस प्रकार से का काम वो कर रही है। बहुत बहुत थैंक यू। मैं वो मुख सीधा कीजिए, कैमरे में दिखाइए। क्योंकि मेन आर्टिस्ट देखो, मेन आर्टिस्ट है जो आज प्रदर्शन हुआ है, कौन सा फॉर्म है? ये जो है भूमि जो है द एग्जिबिशन इज ऑन इन सिमरोजा आर्ट गैलरी, एंड भूमि यूजुअली इज रिप्रेजेंट्स द नेचर and the energies that we get through nature. In today's time it becomes very important to connect to nature, to the environment and the forces of the environment, because we are having so much of ecological disbalance. We are seeing the climate change happening, we are seeing the environment degrading in front of us.
So connecting to nature and to our roots is very important in today's time. So Bhumi essentially represents that. So different themes in Bhumi like the Mayura, the Hansa and the Purush and the Prakriti, Vriksha, all these themes come from the Indian ethos, Indian philosophies, and I travel a lot. I'm an ardent traveler. So when I visit the villages and all, when I stay with these villagers and I stay with the tribal and the folk artists, that is the inspiration that I draw from. So Bhumi has come from there. कियान फाउंडेशन से कैसे जुड़े आप? Kian has been, such a big support. Or they have they're presenting the show in Bombay, and they have been a pillar of support to me. Aarti and Siddharth Naik, both of them. And Aarti is also the curator of the show, and we've been doing this work for about 1.5 years. This is a body of work which has been developed in 1.5 years, and both of us, we have equally contributed in conceptualizing the show, and Aarti and Siddharth, both of them have been such a support to me as an artist. थैंक यू। हो गया? आप कुछ बोलना चाहेंगे कियान फाउंडेशन के बारे में? पहले कियान फाउंडेशन ने ये जो प्रदर्शन किया है, It's a very wonderful initiative. Aarti has taken it forward, and ओके सॉरी, ये किसका है टॉपिक? अरे इसके अंदर वायर डाला। initiative. This is the artist, Shampa Sarkar Das. This is the curator, Aarti Nair. I've only come to admire her work and appreciate her curatorial skills. What I really like is it talks about Bhumi, which is the earth, and you can see all that around you. But today's earth is very ravaged and destroyed day by day by fires, natural disasters, man-made disasters. But this young lady has given us a vision of how beautiful our earth will be. And I congratulate you on this. The colors are very pleasing, and your display is very aesthetic. Thank you. And I'm sure this exhibition is going to attract a lot of coverage and a lot of viewership. And I wish you all the very, very best. Thank you for having invited me, both of you. And people should come and visit the show. मराठी चैनल या होगा, हिंदी चैनल तो बहुत फर्क पड़ेगा, अंग्रेजी चैनल होगा, लेकिन ये भूमि के ऊपर है. सब्जेक्ट एंड थीम इज अर्थ, which is very important to me, and I think to many people, to everybody it should. Thank you. सर आप भी आइए सर, बंद आपकी जो भी इच्छा हो। हिंदी इंग्लिश हाँ, आज यहाँ जो प्रदर्शनी हुई है जो कि भूमि के टाइटल से है, और आर्टिस्ट जो है शंपा दास, तो आफ्टर सीइंग दिस वर्क मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाता जो है निसर्ग के साथ में वो बहुत सही है। और जैसे कि मैंने पहली बार में उनको कहा था, पहली बार जब मैं उनका काम देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका पैलेट जो है, इनका रंग देने का जो तरीका है और जो रंग इस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है, फ्रेंच आर्टिस्ट मोने, उनके साथ कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी, आकाश और नदियाँ, ये जो नैसर्गिक एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अपने आप इनके ये जो पेंटिंग्स है, इस पेंटिंग में आते हैं, और इसे हमको एज ए व्यूअर्स हमको पता लगता है कि आर्टिस्ट का जो लगाव है निसर्ग के साथ में, नेचर के साथ में, वो अच्छी तरह से उनके पैलेट में, इनके पेंटिंग में दिखाई देता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मुझे कहनी है कि ये पेंटिंग देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ ड्रीम, सपना लगता है, सपना होते हुए भी कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि एक तो वो जड़त्व भी है, उसके साथ में वो संवेदनाशील भी है। तो मुझे लगता है कि ये शो जो है वो उनका जो काम है वो और आगे लेके जाएंगे।
सर इसके अलावा ये भी है कि जो आर्टिस्ट अपनी प्रदर्शनी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी आर्टिस्ट को क्यान फाउंडेशन जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया है, क्यान फाउंडेशन, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? न, मैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में जबकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो काम वो करते हैं वो काम सही जगह पहुंचने के लिए उसका सही तरीके से उसका वैल्यूएशन होने के लिए कियान जैसे फाउंडेशन जो है, वो फाउंडेशन की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि फाउंडेशन का काम अगर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो भारतीय कलाकार और कला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरह से जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहें? ज्ञान फाउंडेशन ने कला का प्रदर्शन यहाँ करवाया है। It's an excellent, fantastic show, very nice artwork, and I'm really baffled. Now, the best person to comment on this is my wife, who is herself an artist, Seema. जी आप बोलिए। The work of Shampa is amazing. It's so delicate, though acrylic medium is a little bold and it doesn't have that flow, but she's brought out so much delicate work in acrylic, which is really amazing, and some very different subject, which is eye-catching and very meaningful. So really impressed with the work. Like I never expected, acrylic medium could be so beautiful. शुक्रिया शुक्रिया। We convey our congratulations and all the best wishes. And Kian Foundation has exhibited it very well. Congratulations to Aarti and Siddharth. जी बहुत थैंक यू। All the best. Thank you. Ajay, can you organize the mic? Okay, sure. It's always the thinks that the speaker thinks that he is or she is loud enough. It's we who have to stretch. So let's look out for the mic, if it is possible. And first, let me begin with thanking each and every one of you for taking the time off. I think I'll be audible without the mic. Yeah. Better. Yeah. So, it was Shamba. Hello, mic check. I'll make sure I'm audible enough. Good, everyone. All right. Just feel that you're talking to your husband. Oh, yes. Then the voice will travel up and down. I'll cower in fear. No, not anymore. That's okay. Perfect. So, Parth, thank you very much, each one of you, for taking time off on a precious Saturday. I know how much that means to everyone. And being here to engage with us and enjoy and partake of what you have put forward as Kian, this wonderful artist, Shampa. We bring to you Bhumi. It is the first outing that Kian has had outside of Pune. And there is, I'm overwhelmed by the response we have received from mobile. We, as a foundation, want to bring forward excellent talent, which is all around us, and we wish to bring this on a platform to not only to Mumbai. We are taking the show through the country, to Bangalore, to Chennai, so 20-25 seaters, moving pan-India and also internationally to Netherlands, to Amsterdam specifically, the work for the show which was begun, and Singapore, which will be happening towards the end of the year in the last quarter. I would like to talk a little more about Bhumi and then hand over and have our artist speak a little about what inspired her to bring forth this show. So over to you, Shamba. Thank you. Thank you, Arvind.
No, I'll be audible. I'm even my husband is here. I can Hello. Poor guy. Oh dear. So, first of all, I thank everyone for coming. And Mumbai, it's so difficult to travel, but all of you managed to be here. And some people have come from Pune. Also, I'm so thankful for you to come here. Bhumi, what you see here is a collection of work. For 1.5 years, I've been working on this. And Aarti and Siddharth, both of them have been a pillar of support for me. What you see here is basically my travels. I travel a lot to different parts of India, be it Ladakh, be it the south of India, the north of India, and the east of India. So you'll see influences from my travels to the villages. I go there, stay there for about 20 days, 25 days, 10 days, whatever time permits, and draw my inspiration from the local artisans there, the folk artists, the tribal artists there, the weavers, and that all has come into a culmination into Bhumi. And this topic, this issue becomes very relevant in today's time because we are seeing so much of degradation happening of the ecological balance, the disbalance happening, and we have started taking the environment for granted, and we are seeing the results for that. So Bhumi comes across as a show which is, again, reuniting us to our roots, and the Indian ethos talks a lot about the natural environment and the energies that the natural environment has. And Bhumi is an attempt to reconnect with the environment. So you'll see a lot of elements and a lot of things which are taken from my travels, and also the topics, the titles like Purusha, Prakriti, Mayura, Hansa, Vriksha, these all come from, because I told you I travel to the villages. And also the pandemic has been a major factor in this show because during the pandemic we were inside our houses and nature was blooming outside. And the question was there in my mind that are we all that relevant, are we required at all? Because everything is functioning properly, in fact better. And that's where the animal figures you see here have become the heroes of my canvas, and they have somehow become more important to me. So Bhumi in a way is a culmination of this, and there are a few sculptures which you will see which have come from my work because I am not a sculptor, but it is an attempt to take the elements from my paintings into a 3D format. So that's what the show is essentially about. Thank you for coming. I'll be very quick here. So thank you very much. Thank you all for coming down. All of you have taken a lot of effort, and we're grateful for that. We're looking at Kian to grow not just pan-India but also global. Our concept from the beginning, or belief from the beginning, has always been to pursue good art, great art, and that has led us to discover our own unique way of presenting it. We're grateful to have Shampa on board as our artist, and it's a very exciting series that has been presented for Mumbai. I would like to make a special mention of my dear friend Shampa Budga, who has been a very, very big support. I think we would not have been able to do what we have done in this particular show had it not been for Shambabu and Sarla. Thank you very much for your support, and also a big thanks to Prakash Pal Joshi for writing the curatorial note. It is a wonderful way you have penned down your thoughts. Our close associates, relatives, friends, Mr. Arun Pawar and Seema Pawar, for coming down and taking the time out. And so, thank you very much for being here. Mr. Bide, sorry. Sorry? Graha. It will take me some time to get that. Imagine how I try and cope with Indian news. Thank you very much. Thank you very much.